Bismillahirrahmanirrahim. We are back with the chase of Kashmir Knights. They're chasing 145 in their 20 overs. Sultan Warriors. They have got a good bowling lineup. 144 has been revised. 144 to win from their 20. Wajid and Latif have made their way into the middle. Latif Dar, right-handed batsman. Well, he is always eager to score runs. He takes his time first up, but then once he gets going, he's got a brilliant career so far. He's scored so many half-centuries in that middle order, but now today he has a job to do at the top of the order. Will he do justice to his talent and skill? He's going to take strike. On the non-striker end is Wajid, the wicket-keeper batsman for Kashmir Knights. And he too is one heck of a player. A right-handed sensation. He likes to play and he likes to go after the bowlers. 145. 144. It looks like Samir Bell is marshalling his troops from the far end of the ground. It's going to be ball number 1, and on strike is going to be Latif Dar. Danish Muzaffar. Danish Muzaffar unfortunately got out today when he was looking good. Mehran is going to start the proceedings from the far end of the ground. And we have got the 2 umpires of the match officiating in this tournament. But unfortunately, we don't know their names. Samir Bell is with his bowler Mehran, the top of his bowling mark. From the far end of the ground, 144. Slip in place. There is a gully in place. Wicketkeeper standing well back. Third man is on the boundary. There is a backward point. Short cover on the offside. On the onside, there is a short mid wicket. Short square leg. Man at the deep fine leg boundary. Third man and the fine leg, or the fielders, are going to be out of the circle in the first 6 overs of the power play. Mehran to start. Latif Dar is going to face him. Mid-off, mid-on, inside the circle. Third man, fine leg, out on the boundary. First ball of the chase. Here is Mehran. Catches the ball high onto the bat. Nonetheless, he is able to negotiate. He's off the mark as well. So are Kashmir Knights. They won without loss, chasing 144 for a win here. Latif is off the mark. Wajid is taking guard from the umpire as Mehran prepares to bowl the second delivery of his first over. Wicketkeeper standing well back. Man in the slips. Third man very wide on the boundary. There is a point and a backward point. Mehran for the second time in his over. It's to Wajid. Wajid waits on the back foot, then nudges it away onto the offside for a single. This is sensible batting. He knew that the fielder at point region and backward point region are quite deep. They are on the edge of the circle. He has that on the back of his mind. He knocks that one away onto the offside, sets off for a single. That single takes the total to 2 without loss. Kashmir Knights 145, 144 shouldn't be a problem for them. But who knows? This is cricket. And cricket does wonderful things. Beaten as he was trying to go down the ground. Dot. Javed Daryal, walaikum assalam sir. He's joined us. Naeem Pare. He has joined us as well.
Mehran is bowling from the far end. 2 without loss, chasing 1, 4-4. 144 रन चाहिए जीतने के लिए और जावेद मलिक मैच का आनंद ले रहे हैं। इस बार गेंद लतीफ को ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, ज़्यादा दूर तो गेंद गई नहीं, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया और वहाँ खिलाड़ी दायरे के अंदर जो तैनात थे उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया विकेट कीपर दानिश मुजफ्फर की ओर। उसके बाद थ्रो किया गया दानिश मुजफ्फर के द्वारा भी, पर क्रीज के अंदर मौजूद थे लतीफ डार वो क्रीज के अंदर मौजूद थे। विकेट कीपर दानिश मुजफ्फर ने ये जो कोशिश की इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। क्या 144 चाहिए जीतने के लिए या 145 रन? अब तक कुल मिलाकर टीम का जो स्कोर है 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। वाजिद नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे, लतीफ डार स्ट्राइक पे, दाएं हाथ के बल्लेबाज वो सामना करेंगे गेंदबाज मेहरान का। बट सालिक मैच का आनंद ले रहे हैं, उसके साथ साथ जॉन मोहम्मद भी बने हुए हैं, वानी परवेज भी वर्ल्ड 1 से और मलिक मुजफ्फर जो टंगडार से मैच का आनंद ले रहे हैं। लव यू मम बिलाल पांड्या टीम का हिस्सा नहीं है। मेहरान की ये गेंद इस बार बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी, दूर उस दिशा में गई, फाइन लेग की ओर, खिलाड़ी गेंद के पीछे, क्या वो रोक पाएंगे या नहीं? गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी, विश्वास के साथ स्ट्रोक तो नहीं ले पा रहे हैं लतीफ डार। जैसे भी आए रन आने चाहिए, यही तो टीम के कप्तान चाहेंगे यहाँ दोनों बल्लेबाजों से। Absolutely. Inside edge. The other day it would have cannoned in onto the leg stump, but this time around just past the leg stump on its way to the final leg boundary. The first boundary for Kashmir Knights takes them to 6 without loss. Over number 1 in progress. Lateef Dar has to settle at the top of the order. Here is Mehran, slip in place. Short swivels, pulls. That's outstanding effort by Sameer Bell. Is it Sameer Bell? No, it isn't. Sameer Bell is fielding at mid-off. The throw hits the stumps on the full, but the batsmen were well home and safe. First over done and dusted. It's 8 without loss. Chasing 1-4-4 are the Kashmir Knights team. 143 due to the efforts at the back end of the innings, particularly by Junaid, the left-handed batsman, ably spotted by Musawwir. At one stage, 100 looked to be an impossible possibility. But then they went on to score 143 for the loss of 7. That was due to those heroics at the back end of the innings. Malik Wajid, walaikum assalam. Thank you very much, brother. And thank every one of the valuable viewers who are watching from the comfort of their homes. Wani Parvez has joined us. Thank you very much. Sameer Bell is with his bowler. Sultan Warriors. Amir Afzal is going to bowl. And he's going to bowl from the media centre. Amir Afzal, right arm fast bowler. He's got pace. And at the top of the order, new ball in the hands. He is known for that seam and swing bowling. That's why he has got that slip in place. Third man is on the boundary. Deep fine leg is on the boundary. Here is Amir Afzal. Mid on inside the circle, mid off inside the circle. First ball short of the back foot, punched. Cannot find the right kind of timing. Cannot find that space on the offside. The offside cordon has been strengthened. There is a back foot point, there is a point, a short cover, and there is a mid-off inside the circle. Sameer Bell, time and again, is doing his business at mid-on. Time and again going to his bowler, having a word with him. They had to get wickets in clumps. Outside edge, put down. But I think that ball was dipping onto the wicket-keeper, but that should have been taken. You need to convert those half chances into wickets if you have to make up a match of this. Otherwise, Kashmir Knights will run away
with this match because they have got the powerhouse to do this. Coming back to that delivery that was dipping, that was coming in for the right-hander, was cramped for Rome, was trying to go mid-wicket. The ball catching the outside edge, but the wicket-keeper wasn't able to latch onto that. Let's wait and watch how costly a drop this is. Here is Amir Afzal. To Latif. This time Latif is able to manage this one and dispatch it to the square leg boundary for 4. That's exactly what he's known for. Short on the hip region, swivels and pulls this one. He's bowling to his strength. Once he gets a ball in his strong area, he's quick to latch onto that and dispatch it to the boundary. That boundary has taken the total to 11. 11 for the loss of no wicket, chasing 144. 11 रन टीम का स्कोर। और देखा जाए अब तक कोई झटका तो नहीं लगा, कोई नुकसान नहीं हुआ कश्मीर नाइट्स को। सुर की अगली गेंद, आमिर अफजल ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स शोर से इस बार बल्ला चलाया, बल्ले के बाहरी भाग से गेंद लगी, थर्ड मैन की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर की ओर। इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की सहायता से लतीफ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे 2 चौके जड़े। एक विश्वास भरा था, दूसरा विश्वास की कमी थी उस स्ट्रोक में जब बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी। अब तक 5 रन आए हैं इस ओवर में। 13 रन टीम का स्कोर, हालांकि 12 टीम का स्कोर हुआ है। 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पे, और कश्मीर नाइट्स को जो लक्ष्य मिला चेज करने के लिए 144, कोई छोटा लक्ष्य नहीं, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, और दोधारी तलवार साबित अक्सर व बेशतर होते हैं ये लक्ष्य। ऐसे में आमिर अफजल इस ओवर में अगली बार तेज कदमों के साथ वाजिद को, इस बार पैडलाइन पे गेंद थी, नीरोल से ऊपर जाके गेंद लगी, दौड़ पड़े रन के लिए, लेग बाइज के रूप में 1 रन आएगा टीम के खाते में। वाजिद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे टीम का स्कोर 12 से बढ़कर अब 13 हुआ है। अब तक अगर देखा जाए 6 रन आए हैं इस ओवर में। पहला ओवर जो समाप्त हुआ था उसमें 7 रन खर्च किए गेंदबाज मेहरान ने। आमिर अफजल अपना पहला ओवर कर रहे हैं। WPL की लाइव कवरेज लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर, और ये लाइव कवरेज जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सहायता कर रहे हैं हमारे साथ एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पांपुर, नासरज स्पोर्ट्स स्मार्ट सिंहपुरा, जबकि उसके साथ साथ आर्को फेनिस्ट्रेशन। ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, और बैकफुट पर गए थे स्ट्रोक लेने के लिए, गेंद मिड ऑफ की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ पारी का ये दूसरा ओवर समाप्त हुआ। दूसरा ओवर जो इस पारी का समाप्त हुआ, Two overs bowled. It's 7 for the loss of 1 wicket. I beg your pardon, 7 for none after the first over. It should be revised now. That scoreboard is showing 7 after first. But 2 overs have been bowled, and it's 11 for the loss of no wicket. That's a good delivery. First up, Mehran on the money. This is terrific stuff from Mehran, but these two bowlers, they are on the attack. They have a slip in position, they have a gully in position, a backward point, short cover, and they are hunting after wickets here. They need to get wickets in order to make a match of this. Here is Mehran, up to the stumps, bowls, another good delivery, hitting the bat quite hard and quite high, near the splice region. Managed in the end quite brilliantly by Wajid. Sets off for one more. That single takes the total to 12 for the loss of no wicket. We on JK Sports Time are live from Sheikhul Alam Cricket Stadium, Tarzu, Sopor, and today is an important match of
Wular Premier League. Wular Premier League in its full bloom, one of the premier tournaments of the valley. We are having two best sides fighting it out in the middle. Latif Dar and Wajid are the two not out batsmen in the middle. 12 for the loss of 12 for none. They need 144. They need a good partnership top of the order to set the tone. As here is the next ball. It has been declared as a dead ball. More often than not this happens. The ball slips off the hands. So he was trying to bowl a slower delivery for sure. And that's why the ball, due to sweating here, because it's hot, it's humid. And the two bowlers, they might be finding it quite difficult to hold the ball amid that sweat. This is in the slot, but manages to hit the fielder once again. Samir Bell fails, no run. Frustration on the faces of these two batters out in the middle. They are not able to use those field restrictions, vacant spaces. All they have to do is to loft the ball or get that ball past the in-ring, past the field in the ring. And once the ball beats the fielder here, this is lightning quick outfield at Tarzu. Next ball, that is good delivery. Once again, roll of the fingers on that ball. Latif was through the short early. He has to play sensibly. Latif, well, he is looking out of sorts here. He's looking out of sorts for sure, because he's going after the ball, but the bowler is using his senses to a good effect. He's bowling intelligently, and he's bowling according to a plan. He has a deep square leg on the boundary, and he's bowling slower, short deliveries into the pitch. And that's why Latif Dar is finding it difficult to lay bat onto that. इससे बेहतर था मिड ऑन को बाहर करते, क्योंकि लॉन्ग ऑन की दिशा में ये स्ट्रोक ज़्यादा लेते हैं. लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ का जो इलाका है उस दिशा में स्ट्रोक ज़्यादा खेलते हैं. ये स्ट्रोक लेने की कोशिश की थी उसी दिशा में. मिड ऑन दायरे के अंदर है, रन तो नहीं मिलेगा. अभी भी टीम का स्कोर ठहरा हुआ 13 है. ये तीसरा ओवर प्रगति पे है. मेहरान गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि मीर साजिद भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स के मंच पर. कश्मीर नाइट्स जीतने के लिए 144 रन चाहिए. 143 रन बनाए यहाँ सुल्तान वॉरियर्स श्रीनगर ने. सुल्तान वॉरियर्स 2-2 हाथ कर रही है कश्मीर नाइट्स के साथ. इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज मेहरान जो गेंदबाजी कर रहे हैं दूर उस छोर से. और ऐसे में दानिश मुजफ्फर जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं इस टीम के लिए. स्टार्स भेज सकते हो कमेंट सेक्शन में जाकर. ऑफ साइड में लिया गया स्ट्रोक, फॉलो थ्रू से चलते बने मेहरान. कोशिश की थी कि गेंद को रोककर वो थ्रो करे, पर गेंद को फील्ड नहीं कर सके. एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ. इस ओवर में कोई रन तो नहीं आया है. 3 ओवरों का खेल समाप्त हुआ. 13 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर. कश्मीर नाइट्स जो रन औसत जीतने के लिए शुरू से लगभग 7 से कुछ ज्यादा थी, और ऐसे में अब जो ये एक अच्छा ओवर गया, इससे तो रन रेट थोड़ी सी जरूर बढ़ेगी, पर चिंता की कोई बात नहीं है. एक ऐसा मैदान है बड़े स्ट्रोक ना भी आएंगे, सिंगल डबल से आप काम चला सकते हो. आवश्यकता है, जरूरत है यहाँ विकेट की. क्या वो विकेट हासिल कर पाएंगे आमिर अफजल या नहीं? आमिर अफजल गेंदबाजी करने की तैयारी में. कश्मीर नाइट्स को 144 चाहिए जीतने के लिए. पहला मैच दोनों टीमों के लिए इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में, और जो लक्ष्य मिला चेज करने के लिए 144 कश्मीर नाइट्स को. आमिर अफजल अपना दूसरा, इस पारी का चौथा ओवर करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं. नए ओवर की पहली गेंद ओवर द स्टंप्स. इस बार गेंद को खेला, गेंद हवा में मिड ऑफ की ओर. उस ओर खिलाड़ी तैनात. उन्होंने कोई गलती नहीं की. पहले प्रयास में तो कैच नहीं लिया, और दूसरे प्रयास में ये कैच लिया वहां मिड ऑफ पे तैनात खिलाड़ी ने. इस तरह से मैदान छोड़कर वाजिद वापस जा रहे हैं. ये पहला झटका लगा कश्मीर नाइट्स को. उन्होंने लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव खेलने की कोशिश तो जरूर की थी, पर गेंद और बल्ले का जो संपर्क था वो सही नहीं हुआ. काफी देर तक हवा में रही गेंद.
उस ओर खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को कैच किया। इस तरह से ये झटका लगा पहला कश्मीर नाइट्स को, मैदान छोड़कर वाजिद वापस गए। डगआउट से अब जो नए बल्लेबाज नमूदार हुए और किस बल्लेबाज को डगआउट से भेजा जाएगा जानने की कोशिश तो जरूर करेंगे। डगआउट से जो नए बल्लेबाज नमूदार हुए, क्या आदिल दीना को भेजा जाएगा या किसी और बल्लेबाज की सहायता ली जाएगी? नए बल्लेबाज कश्मीर नाइट्स की तरफ से रियाज कश्मीर नाइट्स की तरफ से तीसरे नंबर पर खेलने के लिए आए हैं। हैदर अली हालांकि अभी भी वो मौजूद है वहां पैड लगाकर, उनका तो इस्तेमाल नहीं किया गया है अब तक हैदर अली का। जबकि टीम लाइनअप में यहाँ मुश्ताक जेडी हैं, आदिल दीना हैं। आदिल दीना के आने से मजबूती तो जरूर मिली है कश्मीर नाइट्स को। आदिल दीना जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए यहाँ 2 सफलताएं भी अर्जित की थी। एक बेहतरीन कैच लिया कॉटन बोल्ड, वो देखने लायक था, दानिश मुजफ्फर को चलता किया। आमिर अफजल सामना करने की तैयारी में है। रियाज ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आमिर अफजल। स्लिप कॉर्डन में खिलाड़ी हैं, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी हैं, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट दायरे के अंदर कवर में एक खिलाड़ी है। मिड ऑफ थोड़ा सा वाइडिश जहां खिलाड़ी को तैनात किया गया। ये है ऑफ साइड की फील्ड, ऑन साइड में डीप फाइन लेग, शॉर्ट मिड विकेट और मिड ऑन। इस बार शॉर्ट गेंद, तेज गेंद थी और नजरें हटाई गेंद की लाइन से। किस गति के साथ ये गेंद की थी, शरीर की ओर आती हुई गेंद शायद हैंडल के साथ जाके टकराई। किस्मत वाले रहे, शरीर के साथ नहीं लगी, क्योंकि ऐसी गेंद तो हमेशा घातक रहती है। जिस गति के साथ यहाँ गेंद की आमिर अफजल ने, उन्होंने कंधे का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया था। बचते हुए नजर आए, किस्मत के सहारे ही सही, राहत की सांस ली होगी यहाँ बल्लेबाज ने। वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं, लगातार फेरबदल कर रहे हैं जल्दी जल्दी यहाँ टीम के कप्तान समीर बेल वो फील्ड परिवर्तन कर रहे हैं। मिड ऑफ जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कुछ परिवर्तन किया और वहां दानिश मुजफ्फर भी कुछ इशारा कर रहे हैं जो विकेट कीपर हैं स्क्वायर लेग पे तैनात खिलाड़ी की तरफ। पता है उन्हें, इस बात का इल्म है, एक बड़ा मैच है, हर खिलाड़ी कप्तान बना हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की वो फील्ड सेट कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं टीम के कप्तान की। आमिर अफजल की ये गेंद, फिर से बल्ला चलाया लतीफ ने, रन के लिए दौड़ पड़े, सीधा थ्रो स्टंप पर तो लगना चाहिए था और तब जाके यहाँ अवसर बन सकता था। ऐसा हुआ नहीं। दानिश मुजफ्फर ने डाइव लगाकर गेंद को अपने पीछे जाने नहीं दिया। ओवरथ्रो का जो खतरा बन सकता था वो टलता हुआ नजर आ रहा है। 1 रन लतीफ के खाते में। लतीफ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, रियाज सामना करने की तैयारी में है। आमिर अफजल गेंदबाजी कर रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स छोर से ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पापोर्ट, नासिर स्पोर्ट्स मार्ट, सिंहपुरा, आर्को फेनिस्ट्रेशन। आमिर अफजल चले तेज कदमों के साथ, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ओवर द स्टंप्स। इस बार बढ़िया गेंद, मिडिल और ऑफ स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया, धकेला गेंद को, रन के लिए दौड़ पड़े लतीफ। रन तो नहीं था, यहाँ गलती की बल्लेबाज लतीफ ने, वो दौड़ पड़े थे और वापस आने में काफी समय जाया किया। इस तरह से लतीफ मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। कश्मीर नाइट्स की टीम संकट में नजर आ रही है। Previous to the 2 deliveries, Sameer Bell was shouting one big run out, and that's what he gets. He gets his wish fulfilled. Latif was herring through for a run. He slipped in pursuit of coming back to his crease, and once he slipped, he still had got time because the fielder was in no position to throw at all. But then he was a bit casual and he was caught well short of the crease. And Kashmir Knights have lost their second wicket. Both the openers are done and dusted for the day. Kashmir Knights are struggling here. They are 13 for the loss of 2 wickets. First, the wicketkeeper batsman Wajid, who was trying to go inside out, lobbed the ball straight to the fielder at short mid-off, and then Latif, he threw his wicket away. He was trying to go for a non-existent single. Sent back, slipped. He had still time to come back. He was casual. The fielder was up, threw the stumps down on the full. He was short of the crease. Brilliant stuff in the field. Sameer Bell
has been quite proactive in his approach. Riaz is at the non-strikers end. New batsman making his way into the middle is John Mohammed. John Mohammed will be at the non-strikers end, beg your pardon, but at the strikers end it's going to be Riaz. Slip in place. Amir Afzal. He's got a third man on the boundary as well. He's bowling quick. He's gaining a lot of bounce from this strip as another back of a length delivery. Stump to stump line, and the batsman pushes it away onto the offside. Let's have a look at the field. Wicketkeeper standing well back. There is a slip in place. Third man is on the boundary. There is a gully, a backward point. Short cover, mid on, up inside the circle. Deep backward square leg and that deep third man field are out on the boundary. The power play restrictions are on. Amir Afzal to bowl. (13) for the loss of 2 wickets. To Riaz. Riaz has smashed it. Good chunk of wood. That's gone for 6 all the way. He was caught in a tangle there, the batsman. He was trying to punch it through cover. The ball reared up from a good length. He went through the short extension of the arms. The fielder was up inside the circle. He knew he had minimum amount of risk in that. And that one carried the ball all its way over the boundary for a 6. First 6 of the match takes the total to 19 for the loss of 2. Over number 4 completed. 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ. टीम का जो स्कोर है 19 रन टीम का स्कोर. Scoreboard is pelo score bem. चार ओवरों का खेल समाप्त हुआ. 22 रन टीम का स्कोर और 2 झटके लगे. लतीफ और वाजिद आउट होने वाले खिलाड़ी हैं. कश्मीर नाइट्स जीतने के लिए 144 रन चाहिए. अभी भी 122 रन जीत से दूर. समीर बेल का इस्तेमाल किया जा रहा है. स्पिनर के खिलाफ जॉन मोहम्मद हमेशा घातक साबित होते हैं और समीर बेल ऐसी स्पिनर नहीं है. खर्चीले साबित होंगे भी तो भी वो विकेट चटकाएंगे क्योंकि उसके पास एक कला है विकेट चटकाने की. ऐसे में विकेट कीपर स्टंप के काफी करीब बने हुए हैं. दानिश मुजफ्फर गांधरबल जिमखाना के कप्तान हुआ करते हैं. वो स्टंप के काफी करीब नजर आ रहे हैं. जॉन मोहम्मद स्ट्राइक पे, रियाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे. WPL वुलर प्रीमियर लीग जहां से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से. लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी हैं. 4 ओवरों का खेल अब तक हुआ है. 22 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर. मिड ऑफ बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे, जबकि मिड ऑफ दायरे के अंदर है. कवर भी दायरे के अंदर है. जबकि उसके साथ साथ देखा जाए बैकवर्ड पॉइंट जहां एक खिलाड़ी है. स्लिप कॉर्डन में भी एक खिलाड़ी को तैनात किया गया. समीर बेल अपना सिपल शुरू करने जा रहे हैं. पहली गेंद इस बार बढ़िया गेंद. हल्के हाथों से गेंद को धकेला. रन के लिए दौड़ पड़े. डायरेक्ट हिट की जरूरत थी पर गेंद स्टंप पर नहीं लगी. स्टंप पर लगती यकीनन ये करीबी हो सकता था. ऐसा हुआ नहीं. जॉन मोहम्मद अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए. घटनाओं से भरा हुआ ये समय रहा. अब तक 2-3 बार अवसर भी बने थे. इस बार ये गेंद बल्ला चलाया. गेंद हवा में. उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं. उन्होंने कोई गलती नहीं की. एक आसान सा कैच लिया गया बैकवर्ड पॉइंट से आए हुए खिलाड़ी के हाथों. इस तरह से रियाज मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं. कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी ऐसा स्ट्रोक खेलने की. और यहाँ अपनी विकेट गंवाई रियाज ने. कश्मीर नाइट्स अब मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है. आदिल दीना को भेज सकते हैं पर हैदर का भी आना बाकी है.
हथियार है पर उसका इस्तेमाल अब तक नहीं किया टीम के कप्तान ने। They are struggling here. 24 for the loss of 3 wickets. 24 for 3. And the team of Sultan Warriors Srinagar are in a huddle here. They are overjoyed. They are happy. Why shouldn't they be? They have picked up 3 top order batsmen. Kashmir Knights batsmen are looking in a hurry. They are looking to score, and that's why they are perishing. Samir Bell into the attack and straight away strikes. Gets the big wicket of Riaz. Riaz is trying to thrash it up and over the offside cordon, high on the bat, and the fielder does the rest. Junaid, who was instrumental in scoring those brisk 40 runs at the back end of the innings, held on to that catch quite brilliantly in the end. Samir Bell to bowl. Adil Dina has been sent in. It won't be easy against Samir Bell, who's a quality off spinner. Long on the boundary, short fine leg, man at 45 and a square leg. Well bowled once again, wicket to wicket. He will keep on bowling. He will keep on bowling those hard lengths. He will never give the batsman any room to work with. The next ball, once again, almost a leading edge to that short cover fielder. This is brilliant stuff. Proactive approach. They have the right fielders in right places, and the batsmen are finding it difficult to score. Here is Samir Bell for the last time in his first over to bowl to Adil. Adil turns it, finds the fielder yet again at short mid-wicket. Another dot delivery. Has he one more delivery remaining in this over? He has. One more to come. Samir Bell. He has to finish strongly. So far, no run has come up this over so far. This one is smashed. That's gone for 4. Not a good finish to a good over. Bowled short on the leg stump. The batsman swivelling and pulling it down to the deep backward square leg boundary for 4. No chance for any fielder. There wasn't any. 4 to finish. It's 27 for 3 after 5. They are scoring at below 6 runs and over. They needed 7.04 runs at the start of the innings. That has gone up to 8. Up to 8 runs and over, approximately up to 8 runs and over now. The asking rate, the last over of the power play, bowling change. Danish Muzaffar is fielding at point. Saqib is going to bowl. Long on and deep mid-wicket of the 2 men out in the deep. As here is Saqib. First ball. This is cut away. That is glorious. Up the back foot. No need to run for those. John Mohammed is in his element straight away. Gets a loosener, a friendly half volley, and smashes it. The timing was immaculate. He threads it into the gap. There was a point inside the circle. There is a short cover inside the circle. He got it exactly in between those two. Now the gap has been plugged. Slip has been removed. John Mohammed is batting on 5. The total is 31 for 3. Saqib
Close to the crease, almost an edge to the wicket-keeper. That was dangerous. He was trying to nudge that ball past the fielder, was fielding at a fly-slip position, almost short third man. Saqib has a good look at that popping crease and the return crease. He's using the crease to a good effect here. From close to the crease once again. Leaves the right-hander. Was looking to cut that. He cannot venture out of his crease because he knows that the wicket-keeper is up. The bowler is bowling gentle medium pace. He has got plenty of protection. Only 2 though. But he is bowling according to his field. Once again leaves the right-hander. Skids across. No chance to hit it off the back foot. Take that first delivery away. He has bowled well. That's a good comeback after being hit for a 4 of the first ball. This time a nudge. Straight to the fielder at backward point. Only 4 runs coming up this over so far. Kashmir Knights struggling. 31 for 3. 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यह छठा ओवर प्रगति पे है. शिकंजा कसा यहाँ सुल्तान वॉरियर्स के गेंदबाजों ने. कुछ अच्छी गेंदबाजी हुई. इस बार गेंद को खेलना चाहते थे. गेंद हवा में, नो मैनर्स लैंड में गेंद गिरेगी. 1 2 3 खिलाड़ी वहां जरूर पहुंचे थे और जॉन मोहम्मद अपने आप से खफा नजर आ रहे हैं. अब वो शेडो प्रैक्टिस कर रहे हैं. किस तरह का स्ट्रोक उन्हें लेना चाहिए था पर वो नहीं ले सके. इस 1 रन की सहायता से 32 रन टीम का स्कोर. पारी का ये छठा ओवर समाप्त हुआ और 3 झटके लगे. रियाज, वाजिद और लतीफ डार आउट होने वाले 3 खिलाड़ी. वाजिद ने गलती की. बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए गए थे समीर बेल के खिलाफ, जबकि उसके साथ साथ देखा जाए लतीफ डार क्रीज से काफी बाहर आए थे जबकि दायरे के अंदर ही गेंद फील्ड हुई थी. उस बार भी जो मौका मिला वहां स्लाइड भी उन्होंने नहीं की, अंदर आने की कोशिश भी उन्होंने नहीं की. हालांकि वो फिसलते हुए नजर आए वहां बीच मैदान पर, बीच विकेट पर, और उसे उबरने में और क्रीज के अंदर वापस आने में समय काफी लगा. उतना समय तो नहीं था वापस आने के लिए. क्रीज से बाहर पाए गए. सीधा थ्रो स्टंप पर लगा. अंपायर के फैसले का भी उन्होंने इंतजार नहीं किया क्योंकि क्रीज से वो काफी बाहर थे. समीर बेल नया ओवर करने के लिए तैयार. जॉन मोहम्मद स्ट्राइक पे रहेंगे. जॉन मोहम्मद अनुभवी खिलाड़ी इस टीम के. काफी बार ऐसा देखने को मिला कि उन्होंने टीम को संकट से निकाला. इरशाद भाई, याद होगा आपको वो क्वार्टर फाइनल होकर सर क्रिकेट टूर्नामेंट का फ्रेंड्स मोटर्स के खिलाफ. आखिरी ओवर में 10 चाहिए थे जीतने के लिए और पहले गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ा था. वो बड़ी जीत हासिल की थी कश्मीर नाइट्स ने. बढ़िया गेंद ड्राइव किया गया, कवर से दूर नहीं. स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं. समीर बेल उस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं. सामने है जॉन मोहम्मद. दाएं हाथ के बल्लेबाज जॉन मोहम्मद सामना करेंगे समीर बेल का. बेल की गेंद दिशा दी गेंद को स्लिप कॉर्डर की तरफ. उस ओर खिलाड़ी थे, उनसे हल्का सा मिसफील्ड हुआ. नहीं मिलना चाहिए रन. जुनेद लेफ्टी ने दूसरा प्रयास किया गेंद को फील्ड करने का. आमिर अफजल से ये मिसफील्ड हुआ था. 1 रन मिलेगा यहां भी. इस 1 रन की मदद से अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं जॉन मोहम्मद. 33 रन टीम का स्कोर. आदिल दीना को यह गेंद पर अंत तक निगाहें बनाए रखी. पहले तो कट करना चाहते थे, फिर गेंद को जुदा करना चाहते थे, बल्ले को जुदा करना चाहते थे गेंद की लाइन से. दिशा दी थर्ड मैन की ओर. वहां दायरे के अंदर ही खिलाड़ी तैनात. इस ओवर में अगली बार इस बार सिर्फ स्ट्रोक खेलने के लिए गए. स्टंप छोड़ती हुई गेंद ऑन साइड में खेलना चाहते थे. इस स्ट्रोक को पैड के साथ रिकोशेट हुई. लेग बाइज के रूप में 1 रन खाते में. समीर बेल वॉलोरेंट से वो गेंदबाजी कर रहे हैं. सामने है जॉन मोहम्मद. जॉन मोहम्मद क्या वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे क्योंकि खामोश रहने वाले बल्लेबाज तो हैं ही नहीं. हल्के हाथ से गेंद को धकेला, फिर से रन के लिए दौड़ पड़े. कवर में जो खिलाड़ी थे उन्होंने शानदार फील्ड की. ज्यादा समय नहीं लिया गेंद को फील्ड करने में, पर थ्रो करने का वो मौका जो बना था थ्रो नहीं कर सके. इस 1 रन की बदौलत कुल मिलाकर अब तक 3 रन आए हैं इस ओवर में. टीम का स्कोर 35, 3 विकेटों के नुकसान पर. यह 7वां ओवर प्रगति पे है. समीर बेल
छोर की अगली गेंद करने के लिए तैयार, फिर से पैड लाइन पे ये गेंद थी, लेग स्टंप छोड़ती हुई, और अंपायर ने वही इशारा किया, ऑन साइड में स्ट्रोक खेलना चाहते थे। पैड के साथ रिकोशेट हुई, शॉट फाइन लेग की ओर गई, उस दिशा में लेग वाइज के रूप में 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की बदौलत कुल मिलाकर 4 रन इस ओवर में 36 टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 7वां ओवर पारी का समाप्त हुआ। $36 for the loss of 3 after 6 overs. This has been slow going for Kashmir Knights because they lost those 3 wickets in a clump. This match is definitely going to be a low scoring thriller. The score is 145. Sultan Warriors are trying everything to defend this. They're bowling good lines, good lengths, they're fielding brilliantly. Sameer Bell has been outstanding in his first 2 overs. He's getting good amount of bounce from this wicket, although he hasn't found that much of turn. As Saqib prepares to bowl his second, now he has got protection on the boundary. The first ball is a gentle drive, cannot beat the field, ricochet. The batsman crossover for a single. Had the fielder stopped that one cleanly, the batsman would never dare to venture out of their creases to go for a single. That single takes the total to 37. 37 for the loss of 3. Over number 8. This has been a laboured effort by Kashmir Knights batsman. This time he pulls it in front of square. He has a man back at the boundary. Junaid picks the ball up, sends in a flat return into the gloves of the wicketkeeper. The batsman crossover for one more. But Ishfaq, Umar Dar and Farhan Ghazi, Sahab Sheikh, Dildar Mushtaq and Mystery Raz. This one has been slog swept. That's gone all the way. 6. A slower delivery attempted by the bowler. Adil Dina has had enough. A swipe across the line. He gets hold of that one. 6 takes the total to 43. This time he pulls it once again. He has got it in the gap. The fielder parries it over the boundary for 4. Misunderstanding between the two fielders. One was coming from square leg, one was coming from mid wicket. Sameer Bell kicks this one over the boundary. He was trying to use his boots to stop that, but he kicks it over the boundary. 6 and a 4. 47 for the loss of 3 wickets. Saqib, this time outside the off stump, taking it away from the batsman. I think the bowler got away with that because the field is up offside. There was no one behind square on the offside. That should have been dispatched to the boundary. Once again, bottom of the bat trickles away to point. The batsman will come back for a second now. Overthrows. They're all over the place. The fielders have started to feel the pressure. 2 more. 49 for the loss of 3. 7 overs gone. 13 runs coming off that over. That is a good over for Kashmir Knights. They need momentum, and overs like these will definitely help them to gain that momentum and start on a platform they need. They need a partnership. They are in with a partnership. John Mohammad and Adil Dina, they're batting sensibly, and they have started to send the ball to the boundary. 49 for the loss of 3. 7 overs gone. यहाँ अगर देखा जाए, हालांकि शायद 8 ओवरों का खेल हुआ है इरशाद भाई, 8 ओवरों का खेल हुआ है, वहाँ स्कोर कार्ड जो बड़ा है उस पर स्कोर आना बाकी है, और ऐसे में इंतज़ार हो रहा है कि क्या स्कोर हुआ है। जीतने के लिए 144 चाहिए। 8 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। देखा जाए टीम का स्कोर
हालांकि 50 रन। अब वो जो बड़ा स्कोर बोर्ड है जो वहां लगा हुआ है वो दर्शा रहा है 50 टीम का स्कोर। 8 ओवरों का खेल अब तक हुआ है, 3 झटके लगे, 144 चाहिए जीतने के लिए। शुरुआती जो झटके लगे तब दबाव में टीम नजर आ रही थी, उसे उभरने की जो कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, कुछ हद तक सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जॉन मोहम्मद दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो स्ट्राइक पे रहेंगे। क्या गेंदबाजी में कोई परिवर्तन किया जाएगा या नहीं? एक और स्पिनर को तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए। जुनेद लेफ्टी बाएं हाथ के गेंदबाज, वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जॉन मोहम्मद दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो स्ट्राइक पे रहेंगे, सामना करेंगे जुनेद लेफ्टी का। जुनेद लेफ्टी जो बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। फील्ड का जायजा लिया जाए। लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, जबकि मिड विकेट क्षेत्र पे एक खिलाड़ी है समीर भाई, वो आए कुछ बातचीत करने के लिए। इसके साथ साथ देखा जाए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पे भी एक खिलाड़ी है। लॉन्ग ऑफ लगाया गया है, कवर में एक खिलाड़ी है। जॉन मोहम्मद दाएं हाथ के बल्लेबाज और आदिल दीना दाएं हाथ के बल्लेबाज, ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ डूबती नैया को सहारा दिया जाए। और इरशाद भाई युवा खिलाड़ी हैं आदिल दीना, ये बड़ी बात है उनके लिए कि वो टीम लाइनअप में है, कश्मीर नाइट्स की लाइनअप में। और जो युवा खिलाड़ी हैं वादी कश्मीर के, उनका ये मुद्दा मकसद रहता है, ख्वाब रहता है कि किसी न किसी बड़े टीम में उन्हें खेलने का मौका मिले। और ऐसे में आदिल दीना, वो कश्मीर नाइट्स का हिस्सा हैं, पूरा सीज़न वो खेलेंगे कश्मीर नाइट्स की तरफ से। अगर कोई इंजरी नहीं हुई, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। ऐसे में युवा खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, और दूसरे छोर पे जॉन मोहम्मद, जिसके पास अनुभव की कमी नहीं है। एक अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है, अनुभव का इस्तेमाल करना चाहेंगे जॉन मोहम्मद, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे नाबाद बल्लेबाज आदिल दीना। उन्होंने एक छक्का जो जड़ा, वो स्लॉग से खेलने के लिए गए थे, मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से वो स्लॉग स्ट्रोक जो उन्होंने लिया वो देखने लायक था। स्पिनर के खिलाफ स्ट्रोक लेना हमेशा आसान नहीं रहता है। कवर में एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। जुनेद लेफ्टी की गेंद, अंदर आती हुई गेंद, बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला। बैकवर्ड पॉइंट और कवर के दरमियान से हल्का सा मिसफील्ड हुआ, वहां तैनात खिलाड़ी से लाभ तो नहीं मिलेगा, केवल 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज मुतमईन होके नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जॉन मोहम्मद। सो में अगली बार आदिल दीना को इस बार कवर के ऊपर से गेंद को खेलना चाहते थे, और वाइडिश लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आए, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज जॉन मोहम्मद और आदिल दीना। अब तक 3 रन इस ओवर में, 53 रन टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां से कोशिश रहेगी दोनों बल्लेबाजों की कि कुछ रन जोड़े जाए स्कोर कार्ड में, ताकि मुश्किल नजर आता हुआ लक्ष्य आसानी से वो हासिल कर सके। दूसरी तरफ सुल्तान वॉरियर्स के जो गेंदबाज हैं, वो चाहेंगे 1-2 झटके और दिए जाए कश्मीर नाइट्स को, ताकि उन्हें बैकफुट पर धकेला जाए। जुनेद लेफ्टी राउंड स्टंप्स ग्लव्स के साथ जाके टकराई, फिर से स्लिप कॉर्नर की ओर गई। आमिर अफजल मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया है। 1 रन खाते में। आदिल दीना नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। इस ओवर में अब तक 4 रन आए हैं। जॉन मोहम्मद सामना करने की तैयारी में। जॉन ने फिर से गेंद के आने का इंतजार किया, धकेला बैकवर्ड पॉइंट की ओर, बड़ी तेजी के साथ रन पूरा किया। अब दबाव बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। 5 रन इस ओवर में, 55 रन टीम का स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। 144 चाहिए जीतने के लिए कश्मीर नाइट्स को। लॉन्ग ऑन पर भी एक खिलाड़ी है, मिड विकेट पे भी एक खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी है। बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे तो ताकत लगानी होगी स्ट्रोक के पीछे। मिस टाइम बाउंड्री पार नहीं जा सकता है, बड़े डायमेंशंस हैं इस मैदान के भी। गेंद को फील्ड करके थ्रो किया नॉन स्ट्राइकिंग एंड की ओर, पर गेंद स्टंप पर नहीं आई। 1 रन खाते में। अब तक 6 रन इस ओवर में, 56 टीम का स्कोर। जॉन मोहम्मद के बल्ले से 2 रन आए हैं इस ओवर में, 4 रन आए आदिल दीना के बल्ले से। इस ओवर में अगली बार, इस बार स्ट्रोक लिया मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। इसी बात की मैं जिक्र कर रहा था, आपको अगर स्ट्रोक लेना होगा तो ताकत लगानी होगी,
मिस टाइम स्ट्रोक बाउंड्री पार जाने वाला नहीं है। ग्राउंड के डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं और उस दिशा में स्ट्रोक लगाने के लिए ताकत होनी चाहिए, टाइमिंग सही होनी चाहिए, जिगर होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। वो सब कुछ नज़र आ रहा है जॉन मोहम्मद में। जॉन मोहम्मद आज कुछ बदले हुए बल्लेबाज नज़र आ रहे हैं। Absolutely. That six of a left-arm orthodox spinner over deep mid-wicket. It's never easy. Again is the spin. And times it brilliantly. Gets the elevation and sends it over deep mid-wicket into the orbit. 6 to finish. Score is 61 after the completion of 9. 11 runs coming off that over. Brilliant to watch that. 6 over deep mid-wicket. Left arm orthodox taking the ball away from the right hander, and he was quick to latch on to that. Pitched on leg stump, was turning away. Absolutely smashed it. Bowling change from the media centre. Media centre end. Sameer Bell is with his bowler. Mohammad Yasin, the experienced Mohammad Yasin, has been brought on into the attack. John Mohammad, as Nasir Bhai pointed out correctly, and he's looking like a different batsman today. He is playing according to a responsibility. He has been given the responsibility and he's shouldering that responsibility quite brilliantly today. Kashmir Knights at one stage were looking down and out. 25 for 3. To the completion of 6, they were 27 for 3. But then this one is gone up in the air. But the fielder is quite wide on that occasion. Hitting it back over the bowler's head on that occasion. Top of the bounce. Almost a forehand smash for a couple of runs. Adil is looking brilliant. 64 for 2. 64 for 3 rather. Misfields. And the batsman capitalizing on that. Go through for yet another single. That single has taken the total to 65. Adil Dina is batting brilliantly. He's got a couple of boundaries and a 6. He's timing the ball brilliantly now. And John Mohammad, well, his experience is speaking volumes today. 63 for the loss of 3. This is over number 10. Two balls have been bowled in this over. 3 runs have been scored as Mohammad Yasin dots it in. Short. This is cut away. One bounce into the hands of the fielder, fielding on the offside, sweeping at the cover boundary. That was cut quite furiously by John Mohammad, hitting the fielder on its way. This time he just drags it to the onside, down towards long on. The batsman crossover for a single. As Amir Afzal fails, the captain is not looking pleased with him. That single takes the total to 65. 65 for the loss of 3. We are in over number 10. Next ball, short, thickish outside edge. That's running away to the third man boundary. Crosses over the boundary. Welcome boundary for John Mohammad and Kashmir Knights. Takes them to 69. This is a good partnership. 27 for 3 at one stage. They are looking stabilized now. They're looking much better in this chase. Kashmir Knights, John Mohammad is handling this situation quite brilliantly. Adil is giving him able company at the other end. Mohammad Yasin for the last time. This is quick. This is too close. Dot to finish. Halfway stage.
69 for the loss of 3. Chasing 144 for a win are the Kashmir Knights team. उनहत्तर रन टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर, जबकि इस पारी का ये 9वां ओवर समाप्त हुआ, हालांकि 10वां ओवर समाप्त हुआ इस पारी का। 144 चाहिए जीतने के लिए कश्मीर नाइट्स को। आउट होने वाले 3 खिलाड़ी रियाज के रूप में झटका लगा, जबकि उसके साथ साथ देखा जाए यहाँ जो आउट होने वाले खिलाड़ी वाजिद हैं और लतीफ़, वाजिद और रियाज आउट होने वाले 3 खिलाड़ी। टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला किया गया, 143 बनाए, 144 चाहिए जीतने के लिए ड्रिंक्स ट्रॉली बीच मैदान पर। आईपीएल महामुकाबला आज शाम को जो होने जा रहा है, इसमें गुजरात टाइटंस 2-2 हाथ करेगी टीम राजस्थान रॉयल्स के साथ। उस पहला जो एडिशन हुआ था शेन वॉन की कप्तानी में, उन्होंने उस एडिशन को अपने नाम किया था। शानदार बल्लेबाजी की थी यूसुफ पठान ने उस पूरे लीग में, जबकि कामरान अकमल पाकिस्तानी जो खिलाड़ी थे उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया। सोहेल तनवीर चाहते हुए खिलाड़ी थे उन दिनों, पर तब से अब तक देखा जाए पाकिस्तानी खिलाड़ी उस लीग में नज़र नहीं आते हैं, ना ही पीएसएल में कोई भारतीय खिलाड़ी आपको नज़र आएगा। शोएब अख्तर शायद केकेआर का हिस्सा थे वो उन दिनों, आफरीदी उस लाइनअप में थे, और आफरीदी का केकेआर में होना, हालांकि डेक्कन के खिलाड़ी थे, रिकी पॉइंटिंग टीम लाइनअप में थे, गांगुली कैप्टन थे केकेआर के, उस समान दिखने लायक रहता था। और कुल मिलाकर मैं ये कहूँ, राजस्थान रॉयल्स उस पहले एडिशन को छोड़कर कभी फिर ऐसी टीम नज़र नहीं आई। राजस्थान रॉयल्स जो पहले एडिशन में नज़र आ रही थी, उसके बाद लगातार वो जूझ रहे थे, बार बार कप्तान बदल रहे थे। संजू सैमसन के आने से उनकी तकदीर बदली हुई तो नज़र ज़रूर आ रही थी। आज शाम फैसला होगा क्या उनके लिए ये दूसरा एडिशन होगा कि नहीं। Well, it might be a good tribute to Shane Warne, who has left this world. And if Sanju Samson and the party wins tonight, it won't be a better tribute than this. And they need to win that, and they need to give a statement that Rajasthan Royals, the pink men around, they have the capability to defeat any team in the world whatsoever. $71 for 3. Play is about to resume. $71 for 3 after 10. They are after 144. They need 73 more runs to win from 10 overs, 7 wickets in hand. Asking rate is about 7 runs, above 7 runs and over. This should not be difficult for Kashmir Knights, provided they don't lose wickets in clumps. 7.10 is the asking rate. 11th over about to commence. Adil and John Mohammad, the two not out batsmen. John Mohammad is having a good look at the ball. The umpire, the standing umpire, has signalled for a change in the ball.
71 for 3. An argument with the umpire regarding the ball. The umpire looks convinced. The ball has to be changed. Now they need 73, Nasir bhai. 73, 7 wickets in hand. This partnership, these two batsmen are settled. They have got batting depth, but two new batsmen. Well, we have always seen a wicket fall after the break. Will it be the case today as well? Will the two batsmen carry their good work up till 15th over? They shouldn't lose a wicket. They're batting according to their plans. They're getting those ones and twos, rotating the strike, and they're getting the odd boundary as well. John Mohammad and Adil would look to carry this good work on and to see their team across the line. कश्मीर नाइट्स के खेमे में कुछ बल्लेबाज जरूर हैं। मुश्ताक जेडी का आना बाकी है। इस टीम लाइनअप में तनवीर है, जबकि हैदर अली टॉप ऑर्डर में हमेशा अक्सर बेशतर नजर आते हैं, पर आज मिडिल ऑर्डर का दायित्व उन्हें संभालना पड़ा। वजह साफ है, मंजूर पांडे टीम लाइनअप में नहीं है, बिलाल पांड्या मिडिल ऑर्डर में नहीं है। आदिल रशीद जो हमेशा नजर आते थे, आज किसी कारण वो यहाँ मौजूद नहीं है। ऐसे में दोहरी जिम्मेदारी होगी हैदर पर भी। यहाँ जो नाबाद दो बल्लेबाज हैं, आदिल दीना और जॉन मोहम्मद, गेंद को बदला जाएगा या नहीं? अंपायर, आप जो गेंद की जिक्र कर रहे थे, थोड़ा वो जो आर्ग्यूमेंट हुआ था, मुतमईन नज़र आ रहे थे गेंद से टीम के कप्तान सुल्तान वॉरियर्स के समीर भाई, खफा नज़र आ रहे थे जॉन मोहम्मद। आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप केवल अंपायर को ये सलाह दे सकते हो कि गेंद ठीक नहीं है, फिर जांच पड़ताल करना, जांचना परखना वो अंपायर का काम होता है। क्या गेंद बदलने के ज़रूरी हैं या नहीं? और ऐसे में शायद अंपायर भी अब मुतमईन नज़र आ रहे हैं और उन्होंने चौथे अंपायर की ओर इशारा किया। खेल रुका हुआ है, 73 ठहरा हुआ, 71 टीम का स्कोर, 73 रन चाहिए जीतने के लिए। 10 ओवरों का खेल बचा हुआ है, 144 जीतने के लिए जो लक्ष्य मिला, 143 पर यहाँ पारी रुकी थी। मुकर्ररा 20 ओवरों में 143 रन बनाए थे। गुलजार साहब स्पोर्ट्स एसोसिएशन तारजू के पब्लिसिटी सेक्रेटरी जो बने हुए हैं आज यहाँ इस मैदान में। लीग क्रिकेट खेलने का जो कॉन्सेप्ट आया था, हालांकि डाउनटाउन क्रिकेट लीग बड़ी लीग है, मशहूर लीग है और कुछ सालों से उसको तो नहीं खेला गया, पर यहाँ जो लीग हो रही है WPL, काफ़ी समय से होती आ रही है। इकलौती लीग ऐसी है जहाँ आपको मैटिंग क्रिकेट पे परवेज रसूल भी नज़र आते हैं। पर जो बिजी शुरू रहा, ट्रायल्स का जो समय था, और ऐसे में WPL ने फैसला किया था कि साल के इन्हीं महीनों में ही इस लीग को कंप्लीट किया जाएगा। और ऐसे में वहाँ ट्रायल्स की जो डेट आए थे, परवेज़ रसूल की जो टीम बिजबिहाड़ा स्पोर्ट्स क्लब, उन खिलाड़ियों का इस टूर्नामेंट में भाग लेना तो मुश्किल था इस साल, जिस कारण शायद वो खेलने के लिए तो नज़र नहीं आएंगे यहाँ खेलते हुए, पर गेस्ट की हैसियत से वो यहाँ ज़रूर होंगे, क्योंकि परवेज़ रसूल के बिना WPL का हर इवेंट अधूरा रहता है। Absolutely, Parvez Rasool loves this stage and loves WPL. He is an absolute darling of the game of cricket in this part of the world. And you mentioned correctly that their team might not be a part of this tournament this year, but he will always be a part of WPL, Wular Premier League. The ball has been replaced now. The two umpires looking content. John Mohammad is still having a good look at the ball now. There are two balls with the umpire. I think the umpire should be wholly and solely responsible to change the ball. According to the rules, the umpire has got every responsibility
and he has got that power to decide whether the ball is right or whether the ball has to be replaced in case it is weary. But I don't know why are the batsmen a part of that. Have the batsmen a role in it, Nasir bhai? और मैं ये कहूँ कि बैट्समैन भी सहमत होना चाहिए गेंद से, और दोनों पक्ष जब मुतमईन होंगे तो अंपायर भी हरी झंडी फिर दिखाएंगे। ऐसे में खुद पर कोई ब्लेम तो लेना नहीं चाहेंगे आज के ऑफिशियल। गेंद को बदला जा रहा है। लतीफ डगआउट से अब जो नमोदार हुए हैं वो कुछ बातचीत कर रहे हैं अंपायर से। जॉन मोहम्मद और उनका साथ दे रहे हैं आदिल दीना। जॉन मोहम्मद और आदिल दीना की तारीफ करनी होगी, काफी समय जाया हो रहा है और ऐसे में खेल जब नए सिरे से शुरू होगा, यकीनन यहां अगर एक और झटका लगेगा कश्मीर नाइट्स को तो वापसी के जो दरवाजे हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे टीम सुल्तान वॉरियर्स के लिए। Absolutely, they are losing precious time in the game and they are losing their momentum. The momentum which they had on their side now wouldn't be there if the game is halted for long now. The two batsmen aren't looking satisfied, they aren't looking content. They are having a discussion there out in the middle. The captain is out, the captain of Kashmir Knights. There shouldn't be a problem with the ball if the umpires are looking satisfied and content. But I don't know for what reason the two batsmen aren't looking content with the ball. This is as simple as it gets. If the batsmen aren't looking content, change the ball, get a new ball and get the play resumed as quickly as possible. Because we are having a second match after this. Kashmir Strikers up against Hamdan Hurricanes. JK Sports Time providing live coverage for this match, important match of WPL between Kashmir Knights and Sultan Warriors Srinagar. Sultan Warriors managing 143 in their allotted 20, setting a target of 144, and halfway stage Kashmir Knights have scored 71 for 3. They need further 73 from the 10 remaining overs with an asking rate of 7 runs. Shades above 7 runs and over. This should not be a problem, but the game has been halted for about 10 minutes after the break. This isn't good news. दूसरा मैच आज के दिन का जो होगा लंच के बाद का, हमदान हुरिकेन्स उमर आलम की कप्तानी में टीम 2-2 हाथ करेगी आसिफ रसूल की टीम कश्मीर स्ट्राइकर्स के साथ। कश्मीर स्ट्राइकर्स में आपको जलील बड़ भी नज़र आएंगे और ऐसे में उस टीम का हिस्सा जो होंगे सजाद भी होंगे उस टीम में, यासिर उस टीम लाइनअप में हो सकते हैं। और देखा जाए कुल मिलाकर एक अच्छा मुकाबला आपकी ओर आ रहा है लंच के बाद भी। अब खेल शुरू होने को है और जुनेद लेफ्टी बाएं हाथ के गेंदबाज वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। आदिल दीना अंतम का बल्ला हाथ में लिए हुए वो सामना करने की तैयारी में है। दूर उस छोर लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी हैं, कवर दायरे के अंदर है। पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के आसपास खिलाड़ी हैं, पॉइंट बाउंड्री लाइन पे है। नए ओवर की पहली गेंद राउंड द स्टंप्स, ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, ऑफ साइड में एक दीवार खड़ा किया गया है खिलाड़ियों का और ऐसे में बेहतर समझा आदिल दीना ने क्यों ना ऑन साइड में ही स्ट्रोक लिया जाए। दायरे के अंदर कोई खिलाड़ी तो था ही नहीं। गेंद उस ओर गई जहां समीर बेल मौजूद। स्कोर में 1 रन का इजाफा। 72 3 विकेटों के नुकसान पर इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी, बल्ला चलाया, कौन बनाती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। वाइड का इशारा आ रहा है, अतिरिक्त के खाते में 1 रन। टीम का स्कोर 71 से बढ़कर अब 73 हो गया है।
73 रन, 3 झटके लगे अब तक कश्मीर नाइट्स को। ऑन साइड में फिर से ये स्ट्रोक लिया, पहले रन के लिए वो दौड़ पड़े, क्या वो दूसरे रन के लिए जाएंगे या नहीं। दूसरा रन तो मिल सकता था, रन तो कम जोखिम ज्यादा था, और ऐसे में जॉन मोहम्मद ने बेहतर समझा। वो 1 रन से मुतमईन नजर आ रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, जबकि आदिल दीना दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। बल्ला हवा में झूलता हुआ आदिल दीना का, आदिल दीना ने स्ट्रोक लिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं, देखना है रोक पाएंगे या नहीं। हल्का सा मिसफील्ड हुआ, पलटकर दूसरा रन भी पूरा किया, और पीछे निगाह है कि आदिल दीना ने क्या उसके साथी क्रीज के अंदर पहुंच गए थे या नहीं, और कुछ फुर्ती दिखाई खिलाड़ी ने, उसने स्ट्राइकिंग एंड की तरफ थ्रो किया जहां आदिल दीना दौड़ रहे थे खतरे वाले छोर की ओर। आदिल दीना को ये गेंद फिर से खेलना चाहते थे, कदमों को बाहर तो खींचा था, पैर को आगे बढ़ाया था स्ट्रोक लेने की जो उन्होंने कोशिश की थी। वो जो हम कहते हैं पिच ऑफ द बॉल, उस तक पहुंच गए थे आदिल दीना, पर स्ट्रोक लेने से चूके। इस बार बढ़िया गेंद, एक अच्छी टेक्निक है, बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे हैं तो सिंगल डबल से आप काम चला सकते हो। प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 1 रन खाते में, स्ट्रोक के साथ ही दौड़ पड़े। ये 1 रन मिला आदिल दीना को। अब तक 4 रन इस ओवर में, 75 टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। जॉन मोहम्मद सामना करने की तैयारी में। मैच एक दिलचस्प मरहले में दाखिल होता जा रहा है। कश्मीर नाइट्स को 3 झटके लगे, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, क्या बड़ा स्ट्रोक लिया उस दिशा में, मिड विकेट क्षेत्र, बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। ताकत खूब लगाई स्ट्रोक के पीछे। समीर बेल वहां तैनात थे, जो ही गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई वो दौड़ पड़े गेंद को लाने के लिए। उसे इस बात का इल्म था कि गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाके गिरेगी। इस छक्के के साथ एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ कश्मीर नाइट्स की दृष्टि से देखा जाए। और समीर बेल खफा नजर आ रहे हैं, सर हिला रहे हैं, शायद उन्हें इस बात का अब सदमा है कि क्यों इस गेंदबाज ने यह गेंद की थी अंत में। अब तक तो अच्छा ओवर जा रहा था। इस तरह से इस छक्के के साथ पारी का ये कुल मिलाकर 11वां ओवर समाप्त हुआ। 144 चाहिए जीतने के लिए। John Mohammad while batting reminds me of Harmanpreet Kaur. I was watching Women T20 Championship. Harmanpreet Kaur 79 for the loss of 3 after 11. Kashmir Knights are 79 for the loss of 3 after 11. 82 for 3. Beg your pardon, correction in the scoreboard once again. 82 for the loss of 3 wickets. I was talking about Harmanpreet Kaur. He was captaining Supernova's team. And John Mohammad reminds me of Harmanpreet Kaur. Harmanpreet Kaur against left-arm orthodox spinners, be it be a right-arm spinner, a leg spinner, she always shuffles across the stumps and targets that mid-wicket and square leg region. It's lots of runs in those areas, and she was brilliant in that tournament, which Supernovas won easily in the end. This one is a half-tracker on the path, swiveled and pulled away down towards deep backward square leg for a single. He's looking annoyed with himself. Is Adil. Nonetheless, he takes the total of Kashmir Knights to 82 for 3. 83 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आप शफल स्ट्रोक की जिक्र कर रहे थे। T20 क्रिकेट हो या एक दिवसीय क्रिकेट या आप टेस्ट क्रिकेट की बात करोगे, शफल स्ट्रोक खेलते हुए काफी रन बटो रहे हैं बल्लेबाज। तेज गेंदबाज के खिलाफ शफल स्ट्रोक खेलते हुए लीडिंग एज लगने का खतरा भी ज्यादा रहता है। बल्ले का मुंह कुछ जल्दी बंद होगा, गेंद कुछ रुक कर आएगी। इस बार बॉलर के सर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, उस दिशा में खिलाड़ी पहुंचे लॉन्ग ऑन क्षेत्र से, उन्होंने एक बेहतरीन कैच लिया। यासीन ने जो जाल बिछाया था उसमें फंसते हुए नजर आए जॉन मोहम्मद। जॉन मोहम्मद मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। ये चौथा झटका लगा कश्मीर नाइट्स को। शफल स्ट्रोक तेज गेंदबाज के खिलाफ लीडिंग एज का खतरा ज्यादा रहता है, और ऐसे में अगर निगाहें सही तरह से नहीं रही गेंद पर, निगाहें हटी तो एलबीडब्ल्यू का भी खतरा ज्यादा रहता है। वीके काफी बार लीडिंग एज पे आउट हुए थे, क्योंकि उन्हें भी तेज गेंदबाज के खिलाफ शफल स्ट्रोक खेलना, स्टंप्स को कवर करके ऑन साइड में मिड विकेट की दिशा में, या वो फ्लिक स्ट्रोक खेलने के लिए भी काफी महारत है उनके पास। कभी कभी इंसान की ताकत ही उसकी कमजोरी बन जाती है।
Absolutely, and talking about Harmanpreet Kaur, she's the only batsman in women's cricket like Moin Khan of Pakistan, who used to sweep from square leg to long on. She's the kind of batsman in women's cricket who always sweeps from square leg to long on. He can hit you a 6 over a long on playing a sweep stroke. She is quite incredible, and she was the player of the tournament to me because she batted brilliantly in all those 3 matches, and Supernovas were the champions of that tournament, Women's T20 Championship. Back live, Mohammad Yasin picks up a big wicket of John Mohammad, who was looking to clear long on, was caught at long on, and Kashmir Knights losing their 4th wicket after a good partnership of 62 for the 6th wicket, for the 5th wicket, beg your pardon, between Adil and John Mohammad. Meanwhile, a good delivery from Mohammad Yasin. He's bowling well from this end. He is slowing it up, and that's why he's getting a grip from the wicket, and he's getting a lot of bounce as well. Here is Mohammad Yasin. This one is outside the off stump once again. Angle of the bat finds the fielder once again at short third. No run. The pressure is building up. The bowlers of Sultan Warriors are out on attack. They need another wicket here. That's good bowling. That's outstanding bowling. Dot to finish. After the completion of 12. It's 83 for the loss of 4 wickets. 83 for 4. I was talking about that partnership of 61 for the 4th wicket between John Mohammad and Adil was quite instrumental in having this Kashmir Knights team back where they belong. They need a victory here. They have the depth in their batting. They lost 3 top order batters for 20 odd runs inside the first power play, but those 2 batsmen ensured no further loss of wickets and ensured that they score runs as well. Junaid to continue. Left arm orthodox. On strike is the new batsman Haider Ali. For Haider Ali, there would be a deep mid wicket, a long on, a deep square leg. These are the bigger boundaries. Long on, deep mid wicket, and deep square leg. As here is Junaid. Punches off the back foot. The fielder is fairly deep, but the fielder from extra cover moves to his right to pick that one up. Single of the first ball takes the total to 84 for the loss of 4 wickets as Junaid. Left arm orthodox. Good matchup against right-handers, but Junaid hasn't looked to apply revs on the ball. He hasn't looked to spin the ball and give it air. He's got plenty of big dimensions. This one swivels. That is a hit-me delivery. That's gone for 4. When you bowl short and you bowl on the pads and there is no one patrolling the boundary behind square on the onside, it is a free hit. 4 takes the total to 87 for the loss of 4 wickets. 87 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और में अगली बार आदिल दीना को खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ. गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई. विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया. हैदर अली नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, आदिल दीना स्ट्राइक पे. और सेट बल्लेबाज हैं आदिल दीना. उन्होंने अब तक देखा जाए अच्छी पारी खेली है. वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं. इस ओवर में अगली बार ऑफ स्टंप से बाहर कवर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक. गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए. खिलाड़ी जरूर पूछे थे, उसके लिए कोई मौका नहीं बना. दूर उस ओर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए. माजिद मागरे मैच का आनंद ले रहे हैं और माजिद मागरे ने किस कमेंट का रिप्लाई किया. हालांकि माजिद भाई वो कमेंट मैंने नहीं देखा है. काफी खफा नजर आ रहे हैं माजिद भाई. माजिद मागरे मैच का आनंद ले रहे हैं. राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार फिर से स्टंप्स की लाइन में ये गेंद थी. वापस धकेला. फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने की कोशिश की गई
उन्हें सफलता मिली, पर यहाँ रन नहीं मिलेगा आदिल दीना को। आदिल दीना अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, ऑफ स्टंप से काफी दूर, निश्चित ही वाइड होगी। जी हाँ, अंपायर का इशारा भी वाइड का। अत्रिक के खाते में 1 रन। देखा जाए 92 टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया गेंद, सिरा लगा, विकेट कीपर को चकमा देती हुई गेंद स्लिप कॉर्डन के दरमियान से जा रही है। स्लिप कॉर्डन से खिलाड़ी चलते बने, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 2 रन मिलेंगे आदिल दीना को, कश्मीर नाइट्स को भी 2 रन मिलेंगे। और यहां 13 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। शायद टीम का स्कोर 95 रन। जीतने के लिए कुल मिलाकर 49 रन चाहिए शायद जीतने के लिए। 42 गेंदें बची हुई हैं। स्कोरर से पुष्टि जरूर हम करना चाहेंगे। 7 ओवरों का खेल बचा हुआ है। आदिल दीना ने अब तक अगर देखा जाए काफी अच्छी पारी खेली, जुझारू पारी आदिल दीना के द्वारा। यह मैच एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ है। 144 चाहिए थे जीतने के लिए और टीम का जो स्कोर है 95, 4 विकेटों के नुकसान पर। 42 गेंदें शेष। जीतने के लिए जो रन चाहिए अभी भी 49 रन। 7 की औसत से रन बनाने होंगे। आदिल दीना वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं, जबकि बल्लेबाज हैदर अली स्ट्राइक पे रहेंगे। कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं मीर बशीर संभल से मलिक रिहान मैच का आनंद ले रहे हैं। आप जेके स्पोर्ट्स टाइम पर बने हुए हो। कश्मीर नाइट्स लक्ष्य जो मिला चेज करने के लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, 144 रन, पर इस मैदान में लक्ष्य चेज करना हमेशा मुश्किल रहता है। जिस तरह की विकेट तैयार की गई है, गेंदबाजों के लिए काफी कुछ है इस विकेट में। समीर बेल अपना नया ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे। समीर बेल गेंदबाजी करने की तैयारी में। नए ओवर की पहली गेंद, समीर बेल सामने है। हैदर बैक फुट पर गए। हैदर गेंद को धकेला, गेंद कवर की ओर जा रही है। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में 1 रन का इजाफा है। इस 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं हैदर अली, जबकि आदिल दीना स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। समीर बेल की अगली गेंद आदिल दीना को। आदिल दीना बैक फुट पर गए, पॉइंट की ओर गेंद गई, रन के लिए दौड़ पड़े थे। वहां मिस फील्ड हुआ खिलाड़ी से। एक अवसर बना था रन आउट करने का, पर अवसर हाथ से जाता हुआ और अगली गेंद का सामना करने के लिए आदिल दीना तैयार हो रही। 96 for the loss of 4. As here is Sameer Bell to bowl to Adil. Bowls to Adil. Adil pulls, short arm jab. Has he got it in the gap? He has. That's gone for 4. Brings up the 100 for Kashmir Knights. Adil Dina is playing a gem of an innings here. Brilliant stroke. Short arm jab. Gets it all the way in front of square on the onside for 4. Brilliantly struck. Sameer Bell isn't looking amused at all. Long on the boundary, deep mid wicket. He bisects those two with absolute precision. Deep square leg, deep mid wicket. There is no one at 45 behind square on the onside. And this is an easy ball. A hit me delivery. He gets away with that because the batsman was not able to time it properly and come back for a brace. 2 more runs. Batting at its best. Adil might be a youngster, but he has got a cool head on his shoulders. He's cool as ice. Here is Sameer. This time flights this one up. He's trying to defend it away onto the offside and hurry through for a single. Almost dragged it back onto the stumps. However, survives. Long on is on the boundary. Sameer Bell is pointing towards the long on fielder to warm up. He might be introduced into the attack, as here is Sameer Bell once again. This time waits for the ball to turn, then nudges it straight to the fielder at short third. End of the over. After the completion of that over, the total is 102 for the loss of 4. They need 42 from the remaining 36 balls.
36 गेंदे 42 रन, कुछ भी हो सकता है। अभी भी वो जो 7 की औसत से उन्हें रन बनाने, 7 की औसत से ये रन आ रहे हैं, क्या अंतिम ओवर में 10-11 रन होंगे जीतने के लिए, जहां चमत्कार हो सकता है। कश्मीर नाइट्स की जो टीम है, शुरुआती झटके लगे, उसे उभरने में जो सहायता की जॉन मोहम्मद ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, वो काबिल तारीफ था। और उससे बड़ी बात यह है आदिल दीना की। अरशद भाई, आपने आदिल दीना को ज़्यादा नहीं देखा होगा, पर लोकप्रिय खिलाड़ी हैं उस इलाके में। और जब वो खेलने के लिए आए, मैंने आपको कहा भी कि कश्मीर नाइट्स के खेमे में आज के बाद वो नजर आएंगे। टीम को मजबूती ज़रूर मिली, क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ उनके पैर हमेशा ठीक चलते हैं। और स्पिनर को खेलना ये एक हुनर है, एक कला है। मात्र कुछ क्षणों में आपको फैसला करना होता है, स्ट्रोक लेना है तो किस दिशा में लेना है। और ऐसे में आपको जो घुमाव होता है उंगलियों का, उसे आपको ये जांचना पड़ता है कि किस तरह की गेंद आएगी। और ऐसे में लगता होगा घर बैठे दर्शकों को शायद स्पिनर के खिलाफ स्ट्रोक लेना आसान रहता है। ऐसा तो कभी होता नहीं। तेज गेंदबाज के खिलाफ आप रणनीति बना सकते हो, पर स्पिनर के खिलाफ हर गेंद पर आपको नई नई रणनीति बनानी पड़ती है। आदिल दीना नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, हैदर अली स्ट्राइक पे, नया ओवर शुरू होने को है। दूर उस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज मेहरान लोन। मेहरान गेंदबाजी कर रहे हैं दूर उस छोर से, जबकि हैदर अली स्ट्राइक पे। लाइव कवरेज का आप आनंद ले रहे हो घर बैठे जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। कश्मीर नाइट्स 2-2 हाथ कर रही हैं सुल्तान वॉरियर्स श्रीनगर के साथ। ये बड़ा मुकाबला हो रहा है यहाँ WPL का, वलूर प्रीमियर लीग, शेखुल आलम स्टेडियम तारजू से हम आपके साथ बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के जरिए से। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद पैड लाइन पे हैदर अली को। एक अच्छी रणनीति हैदर अली की भी, उसे इस बात का इल्म है कि ठीक तरह से स्ट्रोक लगा रहे हैं यहाँ आदिल दीना, क्यों न सिंगल लेकर उन्हें स्ट्राइक पे लाया जाए। और हैदर अली नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, आदिल दीना स्ट्राइक पे। मुश्ताक जेडी का आना बाकी है। और ऐसे में बिलाल पांड्या और मंजूर पांडो के न होने से टीम का जो मिडल ऑर्डर है वो तो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। उसको संभालने की जो कोशिश की हैदर अली ने, यही कारण है कि आज काफी लेट वो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अनुभवी खिलाड़ी हैं टीम के हैदर अली। लतीफ डार इनिंग की शुरुआत में वो रन आउट हुए थे, वो दूसरा झटका लगा था लतीफ डार के रूप में। वाजिद भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके। और उसके बाद देखा जाए, डूबती नैया को और डुबोया वहां रियाज ने। एक लापरवाह स्ट्रोक जो उन्होंने लिया था। युवा खिलाड़ी हैं। मेहरान की गेंद फिर से शॉट थी, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद। कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश भी नहीं की हैदर अली ने। जानते हैं आस्किंग रेट कोई ज्यादा नहीं है, डराने वाली नहीं है। इक्के दुक्के रन से ही काम चला रहे हैं। 3 रन अब तक इस ओवर में आए हैं। 102 से बढ़कर कुल मिलाकर 105 हुआ टीम का स्कोर। 4 झटके लगे। दानिश मुजफ्फर विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। 5 हैं ऑफ साइड में, 4 हैं ऑन साइड में। 5-4 की फील्ड के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं मेहरान। ये देखते हुए ऑफ और ऑन साइड में लगभग बराबर के खिलाड़ी हैं। शायद ये कारण है कि स्टंप्स की सीध में ही वो गेंदबाजी कर रहे हैं। मेहरान की ये गेंद इस बार खेलना चाहते थे, जरूर गए थे पुल करने के लिए, पर ज्यादा कद नहीं है आदिल दीना का। किस विश्वास के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है। आदिल दीना ऐसे खिलाड़ी हैं, जब से एंथम ने वो धमाकेदार एंट्री की वादी कश्मीर में, तब से एंथम का विलो इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वफादार निकले ये एंथम के, और एंथम के बैट ने उन्हें कभी दगा नहीं दिया। Absolutely, Anthem Sports India has done wonders, and the willows they are sending to these players, they are absolutely marvelous. That's an outstanding take from the wicketkeeper. Inside edge, that was travelling, diving to his left, stopping a certain boundary. Brilliant stuff from behind the stumps. After the completion of that over, I think, no, that over is still on. We have a couple of balls to go. 15th over in progress. Those two batsmen out in the middle are doing a decent job. They're knocking the balls in the gap, and that's all they need. Run a ball. This is an outstanding shot. That might be in the air, but the fielder has to do a brilliant job of backtracking and catching that one. That was from the middle of the bat, but he checked his stroke at the last moment.
Had he gone through with the shot, that would have gone over extra cover. That would have been the shot of the day. But it was placed brilliantly for a couple of runs. 2 more to finish that over. 15 overs gone. It's 108 for the loss of 4. आदिल दीना एंथम का बल्ला हाथ में लिए हुए और स्ट्रोक तो लाजवाब था, टाइमिंग बेहतरीन थी। इंग्लिश विलो जो एंथम के हमेशा आते हैं कमाल के, और कश्मीर विलो बनाते हुए उन्होंने रही सही कसर पूरी की। और यहाँ जो 2 हथियार हैं, एक हैदर के हाथ में और एक दीना के हाथ में, दोनों एंथम के हैं। एक तो क्वांटम है, दूसरा सिरास है। काफ़ी अच्छे बैट्स तैयार कर रहे हैं एंथम वाले भी। और कुल मिलाकर देखा जाए, यहाँ के जो क्रिकेटर हैं, यहाँ की जो क्रिकेट है, उसमें नई रूह फेंकी है एंथम ने। Absolutely. And you recognize those bats from a distance. That's quite outstanding from my perspective as well. And absolutely 100% correct. Anthem Sports India, they have brought a revolution in cricket bat manufacturing, and those bats which they send to their sponsored players and to those players who they don't sponsor, they are good piece of willows. And we saw that. I thought that ball might have gone for a 6 over extra. This is a huge boundary, might be a 75-meter boundary there, and almost went for a 6 on a mere push. 107 for the loss of 4 after 15. Now they need 37 runs. 37 from the remaining 5 overs. A slog overs, 30 balls, 37 runs, wicket or a 2. The asking rate has gone above 7 runs and over. A wicket or a 2 at this stage. Who knows? This game can go down the wire. Here is the next ball of a next over. That's gone over mid-off. Mid-off was up inside the circle. That is not a good ball to bowl. Mid-off up. You're bowling an over-pitch half volley outside the off stump, and dealt with by Haider Ali. Good start to this over. 33 runs needed now. Outside the off stump, Haider Ali knew there was no one back. Mid-off was up, and he just lofted it inside out over the boundary. Malik Sharif, thank you very much, brother, for watching this from the comfort of your shop. I know. Adil Bashir, thank you very much as well. Sajid Bhatt, as here is the next delivery. This is outside the off stump. What a shot that is. But there is a man back sweeping on the boundary. But look at the timing on that shot. It was cut furiously. 1 more run takes the total to 112. Amir Afzal is bowling his third. He bowled 2 overs in that power play. He was a part of JKPL and he was quite outstanding in that tournament. Next ball, inside edge. It's trickling down to the fine leg boundary. Fielder in pursuit. He is a mute spectator. 4 more. This is a welcome boundary for Kashmir Knights. 4 more. Now that boundary takes the total to 117. They need 27 runs more to win this, and win this by a big margin. Shouts from the dugout. Don't haste. Don't make haste. Play responsibly and play according to the merit. That has been the day. That has been the order of the day. Root Mustafa. Haider Ali is a finisher. He is a stunner. I can say that. Heavily built, and he gives that ball a fair tonk. Once again, he was trying to run it down to third man, bottom edged. Fell short of the wicket-keeper. Almost over those bails as well. He's absolutely lucky to survive. Shabir Rishi says, what a match. Couple of wickets here. This will make it interesting. 117 for the loss of
4 wickets. Amir Afzal is going back to the top of his bowling mark. He has a long on, he has a deep mid wicket, he has a deep square leg. Can this be a short ball? And attempting to hold him out in the deep. Exactly the short kind of a delivery. Back of a length though, was not that much short. Hit away down towards square leg for a single. That single takes the total to 118. Fayaz Ahmed has joined us, so has Hazim Firdos. हाजिम फिरदौस इमो इम्तियाज फयाज भाई भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर, और जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच आपके लिए उपस्थित है। आप स्टार्स भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए। करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर सेंड स्टार्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप फ्री स्टार्स भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए। थर्ड मैन पे जो खिलाड़ी हैं अब वो दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं, पॉइंट लगाया गया है, कवर तो दायरे के अंदर है, क्या उस इलाके में स्ट्रोक लेंगे। मिड विकेट पे भी खिलाड़ी हैं, हैदर अली जहां कहीं स्ट्रोक लेना चाहेंगे वहां खिलाड़ियों को तैनात किया गया। आमिर अफजल की अगेन शॉट उसी दिशा में स्ट्रोक लिया मिड विकेट की तरफ, उस और खिलाड़ी हैं मिड विकेट पॉइंट और लॉन्ग ऑफ, इस दिशा में ज्यादा स्ट्रोक लेना पसंद करते हैं हैदर अली। और ऐसे में आमिर अफजल की इस आखिरी गेंद पर 1 रन मिला बल्लेबाज हैदर को, टीम को 1 रन मिला। कुल मिलाकर 24 गेंदें अब बची हुई हैं, शायद जीतने के लिए 25 रन होंगे। की पुष्टि करने के लिए स्कोरर से जरूर पहुंचने जाएंगे हम, और ऐसे में 4 ओवरों का खेल बचा हुआ है। गुलजार साहब स्पोक्स पर्सन स्पोर्ट्स एसोसिएशन तारजू के, वो बने हुए हैं वहां उस मंच पर जहां स्कोरर भी लगा हुआ है। हैदर अली नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, आदिल दीना स्ट्राइक पे। जेके स्पोर्ट्स टाइम पर आप इस मैच की लाइव कवरेज का आनंद ले रहे हो, स्टार्स भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए। और जिस किसी व्यूवर ने अब स्टार्स भेजे उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इक्वेशन क्या है, और जॉन मोहम्मद ने स्टार्स भेजे। जॉन भाई आपका शुक्रिया इस प्यार के लिए, इस सहयोग के लिए, इस साथ के लिए। 118 टीम का स्कोर। अब जो स्थिति है जीतने के लिए शायद 26 रन चाहिए, 24 गेंदे 26 रन चाहिए जीतने के लिए। समीर बेल गेंदबाजी करने की तैयारी में है, हैदर अली स्ट्राइक पे, दाएं हाथ के बल्लेबाज हैदर अली, और बिलाल अहमद ने सहयोग किया। बिलाल भाई आपका शुक्रिया, आपने स्टार्स भेजे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए। सुहेल रमजान बने हुए हैं, जबकि समीर अली भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आदिल भट्ट बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। इम्तियाज सोफी ने स्टार्स भेजे। इम्तियाज भाई आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। समीर बेल की अगेन बढ़िया गेंद स्टंप्स की लाइन में, जल्दबाजी में नजर नहीं आ रहे हैं हैदर अली। सहयोग दिया आदिल दीना ने नॉन स्ट्राइकिंग एंड से, वो अभी भी नाबाद हैं। हल्के हाथों से गेंद को धकेला, किसी रन के लिए नहीं, उमरदार मैच का आनंद ले रहे हैं। ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, हल्के हाथों से गेंद को धकेला, कवर की ओर, रन के लिए दौड़ पड़े, सीधा थ्रो स्टंप पर नहीं लगा। अब वो रन के लिए जा रहे हैं, दूसरे रन के लिए। क्या हैदर तीसरे रन के बारे में सोचेंगे या नहीं? आदिल दीना का साथ मिला, वो तीसरे रन के लिए जा रहे हैं। डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, सीधा थ्रो स्टंप पर नहीं लगा। 22 गेंदें बची हुई हैं, जीतने के लिए चाहिए 23 रन। हैदर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अब स्टार्स भेजे हैं। उमर फारूक आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। यासीन अली बने हुए हैं, शेख बिलाल ने यहां सहयोग किया। आदिल भी मैच का आनंद ले रहे हैं। स्टार्स भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए, वो आपके द्वारा दिया गया डिजिटल गिफ्ट होगा। जहांगीर जॉन जावेद आर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। 22 गेंदें बची हुई हैं, अब तक 3 रन आए हैं इस ओवर में। कुल मिलाकर 23 रन चाहिए जीतने के लिए। एक अच्छा मैच आपकी ओर आ रहा है। क्या कश्मीर नाइट्स को यहां जीत मिलेगी? क्या कोई पलटवार करने में सफल होंगे यहां गेंदबाज सुल्तान वॉरियर्स श्रीनगर के? समीर बेल की गेंद आदिल दीना को स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को खेलना चाहते थे, वहां उस ओर खिलाड़ी तैनात, पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। वहां तैनात खिलाड़ी ने कोशिश तो जरूर की थी, उन्होंने कैच तो जरूर लिया, पर वहां जो दर्शक मौजूद थे उन्होंने इशारा किया कि रस्सी जो लगी हुई है वहां उसके साथ पैर जाके टकराया। और जो वहां दर्शक मौजूद थे उन्होंने भी इशारा किया अंपायर की तरफ से, और ये गलती जो हुई स्वीकार की वहां तैनात खिलाड़ी ने। खफा नजर आ रहे हैं। 6 रन खाते में। समीर बेल की गेंद आदिल दीना को ऑन साइड में लिया गया, स्ट्रोक, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है। खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ना बेकार, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। उन्होंने कोशिश की गेंद को अंदर धकेलने की, पर गेंद पैर के साथ लगने के बाद वहां रस्सी के साथ जाके टकराई। इस तरह से 4 और रन टीम के खाते में। अब 13 रन चाहिए जीतने के लिए। 13 रन जीतने के लिए समीर बेल खफा नजर आ रहे हैं।
मुश्तबा रजवी भी मैच का आनंद ले रहे हैं। इस ओवर में अगली बार खेलना चाहते थे इस गेंद को। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, अभी भी टीम का स्कोर, हालांकि एक गेंद शायद आनी बाकी है इस ओवर में। इरशाद भाई शायद केवल 13 रन आए हैं अब तक इस ओवर में। पहली गेंद पर 3, उसके बाद 6 और 4, अब 13 चाहिए जीतने के लिए। 19 गेंदें बची हुई हैं। आदिल दीना सामना करने के लिए तैयार, लेग स्टंप छोड़ती हुई जा रही है। वाइड का इशारा तो संभवतः आएगा, जी हाँ वाइड का इशारा आ रहा है। 12 रन 18 गेंदें। कश्मीर नाइट्स को अगर जीत मिले तो आदिल दीना मैन ऑफ द मैच होंगे, क्योंकि गेंदबाजी में भी उन्होंने 2 विकेटें चटकाई और एक अच्छी पारी खेली। एक अच्छे खिलाड़ी की दरकार होती है अच्छी परफॉर्मेंस की बड़े मैच में, इससे तो ज्यादा नहीं चाहा होगा कश्मीर नाइट्स के कप्तान ने। Good all-round performance from Adil Dina. They are on the brink of a huge victory against Sultan Warriors. At one stage they were looking down and out, but then they have done a brilliant performance so far. This time he pushes it away onto the offside. Haider Ali is not interested in a run. Over comes to a conclusion. 17 overs done. The total is 131 for the loss of 4 wickets. 1-3-1 for 4. 3 overs, 18 balls. And they need 11 runs. They have 6 wickets in their bank. This should not be a problem for these 2 batsmen of Kashmir Knights out in the middle. After this, we have a big match coming your way. We have Kashmir Strikers up against Hamdan Hurricanes. Sheikh Bilal asks us, ground name, Sheikhul Alam Cricket Stadium, Tarzu Sopor, Wular Premier League. They need 11 runs from the remaining 18 balls. Four wickets down, 6 wickets remaining, 17 overs have been bowled, 132, 12 runs from 18 balls, 1-3-2 for 4. Kashmir Strikers would be captained by Asif Rasool, and Umar Alam would be captaining the team of Hamdan Hurricanes. Asif Rasool is out on the boundary. The 2 teams are here, and we would be able to witness one heck of a match. Mehran to bowl the 18th, given the proper respect by Haider Ali. That's well bowled, back of a length, no need to go for the glory. He knows that on the back of the mind there might be a twist and a turn at the back end of the innings. That's why Haider Ali is looking calm, cool as ice, and he is giving the proper respect to a good ball from Mehran. Mehran Lon is a short backward square inside the circle, attempted slower, that is belted down the ground for 4. He was trying to bowl a cutter on that occasion. Bowled it wider, bowled it fuller in the slot. And Haider Ali is not going to miss onto that. Now they need only 8 runs. 1-3-6 for the loss of 4 wickets. This is turning out to be an easy chase. This is turning out to be a walk in the park for the team of Kashmir Knights. Adil and Haider Ali making it sure that they don't lose any wickets, and they have made it sure, and they haven't lost any wickets up till now. Here is Mehran up to the wickets. This is short, this is pummeled. Has that gone to the boundary? No, it hasn't. Junaid is there. One bounce, picks the ball up, throws it in. The batsman crossover, amble across for one more. That single takes the total to 137. Now they need 7 runs for a well-deserved victory. Kashmir Knights, Sheikhul Alam Cricket Stadium, Tarzu Sopor, is hosting WPL
And this is one of the important matches, but Kashmir Knights have done wonderfully well. Up in the air as the batsman was making room and guiding this one over point down to the deep point boundary. Now they are a hit away for a win. Will this be the last over of the match? 6 runs needed. Haider Ali is there to play those winning strokes. If he gets one right, that will be out of the ground. Mehran. Right arm over the stumps. Bowls to Haider. Haider has beautifully flicked it. A helicopter, a mini helicopter, and disappears past mid-wicket for 4. Outstanding stroke. That was on the pads. Fuller. You cannot bowl onto the pads of Haider Ali. He will smash you all day long. That boundary takes Kashmir Knights to 142. Now 2 runs away from a well-deserved victory. What a partnership this has been. Mehran bowls the next ball. This is slower. Will they push harder for a couple? They won't push harder for a couple. They're content with a single. That was the last ball of this over. So 18 overs done. The scores are levelled. 143 for the loss of 4 wickets. Those two partnerships, after they were reduced to 22 for 3 at one stage. 22 for 3 at one stage. And then a partnership of 61 between John Mohammad and Adil. And when John Mohammad got out came Haider Ali. What an outstanding partnership this has been. जॉन मोहम्मद की अगर मैं बात करूं, उन्होंने अच्छा योगदान दिया, टीम को संकट से बाहर निकाला। वो जो उन्होंने फिर एक नींव रखी, एक आधार रखी, जिस पे बड़ी इमारत बनाने की ज़रूरत थी, और वो काम अंत में किया हैदर ने। पर ये सब कुछ जिस मजबूती में टीम नजर आ रही है, आदिल दीना के सहयोग के बिना ये नामुमकिन था। आदिल दीना ने क्या काम किया आज। लेग स्टंप पर यह गेंद थी, ऑन साइड में धकेला हैदर अली ने। वो रन तो लेना नहीं चाहते थे, आदिल दीना आए थे, शायद किसी बड़े स्ट्रोक के साथ पारी का अंत करना चाहते थे। यहाँ ये 1 रन मिला कश्मीर नाइट्स को और टीम को विजय मिली। 6 विकेटों से बड़ी जीत हासिल की यहाँ कश्मीर नाइट्स ने। हैदर अली अब वापस जा रहे हैं। वो रन तो लेना नहीं चाहते थे, उसे शायद इस बात का इल्म था किसी बड़े स्ट्रोक से वो मैच का अंत करना चाहेंगे। क्या एक रणनीति के तहत वो खेलना चाहते थे ये पूरा ओवर, ताकि अगले ओवर में कोई बड़ा स्ट्रोक आए, विनिंग स्ट्रोक आदिल दीना के बल्ले से। आदिल दीना की तारीफ कर रहे हैं यहाँ ये तमाम खिलाड़ी। उन्हें इस बात का इल्म है कि किस तरह की उन्होंने पारी खेली। हम आपसे विदा चाहते हैं इस खबर के साथ कि यहाँ जो बड़ी जीत हासिल की कश्मीर नाइट्स ने, WPL में ये उन्हें पहली जीत मिली। WPL 2022 की अगर हम बात करें, बड़ी जीत के साथ यहाँ शुरुआत की है। टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई सुल्तान वॉरियर्स की टीम। हर टीम को यहाँ 3-3 मैच लीग स्टेज में खेलने को मिलेंगे। आपसे विदा चाहेंगे इस उम्मीद के साथ, दूसरा मैच शुरू होगा, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कश्मीर स्ट्राइकर्स का मुकाबला होगा दूसरे राउंड में यहाँ हमदान हरिकेन्स के साथ। आपसे विदा चाहेंगे, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।